Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Amjad Malik Saab. Thank you very much for inviting me today here. And His Excellency Faisal Karim Kundi, Governor Khyber Pakhtunkhwa, Excellencies, Senior Diplomat from the Iranian Embassy. Special thanks to Amjad Malik Saab and all the participants. सुबह से हमारी इस मौजू पे सीपेक के मौजू पे डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही थी, बट मैं एक बिल्कुल सेपरेट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ. आई विश आई हैड एक्चुअली प्रिपेयर्ड ए प्रेजेंटेशन about the Islamic financial ecosystem, but probably the arrangement was not there to show the video link and the presentation. Nevertheless, I will try to explain myself. So basically आपको ये अंदाज़ा होगा कि सीपेक जैसे अब मेरे से पहले स्पीकर ने आके बात की कि सीपेक के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी लोग फैलाते हैं, हमारे दुश्मन ममालिक भी और हमारे अंदर के कुछ लोग भी. एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इवन वेस्ट, दे ऑलवेज talk about that Pakistan has engulfed itself into a debt trap कि जो चाइना ने पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पाकिस्तान के लिए एक डेट ट्रैप बन गया है. दिस इज़ नॉट लाइक दिस. सो अगर इसमें कुछ है भी तो उसका एक इलाज मौजूद है और जिसके ऊपर अब सीरियसली फाइनेंशियल मार्केट्स ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है. सो लेट मी गो लिटिल इन द प्रीएम्बल एंड देन आई एक्सप्लेन हाउ एंड द Sukuk can work for this. So Prophet Muhammad, peace be upon him, established unique economic and well-being system with Allah's guidance. This system ensured the welfare of humanity and paved the way for peaceful progress. Human dignity and social service, social justice served as a key pillars. It also addresses the need of our planet and promotes environmental sustainability. Since then, every Muslim has aspired to establish the economic framework for the broader good of humanity. The financial sector is a key, even leading component of any economic system. In recent years, Pakistan has accelerated efforts to establish an Islamic financial system. As you know, our Federal Shariat Court has also given a verdict to convert the system into Islamic, and also the 26th amendment passed by the Parliament give the guarantee that by January 1st, 2028, the economy will be converted into Islamic Sharia compliant. Against this backdrop, Zahir Latif Khan Securities has decided to take a lead in promoting the Islamic financial system. So we are the first and the pioneer in have gotten the license from SCCP and State Bank to promote the Islamic financial systems. It has also developed new ideas to promote Sukuk bonds. As you know, the Sukuks were earlier traded between the banks only, but now the Sukuks have been listed on the Pakistan Stock Exchange. So how it can work that all the debt, because Sukuk जो है वो नॉर्मल डेट से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है. दूसरे जो कन्वेंशनल डेट है वो तो पैसे दे के उसके बदले में पैसे जमा उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, बट Sukuks आर बैक्ड बाय सम टेंजिबल एसेट्स. सो आपको ये सबको पता है कि जो सीपेक है, सीपेक के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स की सूरत में है, चाहे वो हाईवेज बने हैं, चाहे वो बिजली घर बने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल स्टेट बने हैं, ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट वगैरह वगैरह. सो Sukuks are backed by the asset, and you can let the general public to participate in the in subscribing Sukuks, so that the burden of debt lowers from the government of Pakistan. I've got the slides for which says how much public has participated in Sukuks. You will be very surprised to know that 2.5 trillion rupees, 2.25 trillion rupees through 18 Ajara Sukuks auctions has held at Pakistan Stock Exchange within last 1 year and 4 months. So if Pakistan's capital market and the individual
public and the banks also have so much potential to raise 2.25 trillion rupees in 14 months, then why cannot we convert the Chinese debt into sukuks, which is not only Islamic halal, but also it brings the public participation in it, which will create a confidence among the general investors and Pakistanis and world over. And जो blackmailing होती है IMF की तरफ से या West की तरफ से कि जी आप लोगों ने चाइना डेट बहुत बड़ा ले लिया है और हमें अपने पैसों की गारंटी चाहिए, तो इस चीज़ का इलाज हो सकता है. So it is initial thought which I have given through this conference. Thank you very much, Amjad Sahab, for giving me chance about it. But I believe that we will keep on working on this thing. Thank you very much.